Hello student. Last time we are studying the chapter number 5 Democracy 10th class SST. We are learn about the demerits of democracy. Today we are starting new topic, the condition necessary for success of democracy. Again today's topic is the conditions necessary for success of डेमोक्रेसी. इट मीन्स जो डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी जो दशाएं हैं वो होनी अनिवार्य है. इन इंडिया वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. वी आर अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया इज 1947. टुडे इज 2020. अप्रॉक्स 73 years. Approx 73 years of our government in democratic government, and the India is the successfully run in the country of democratic government because the necessary condition are the follows are in India. First, the condition necessary for the success of democracy is free and fair election. First condition for successful democracy is free and fair election. It means the election of the representative are fair and free and fair. A particular period we are getting the elections. It means एक निश्चित समय पर election होने चाहिए. In India we have saw the अप्रॉक्स पर 5 years the new election in India. इंडिया में हम देखते हैं कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं. अप्रॉक्स यानी कि अप्रॉक्स 5 years the election of India. In election the fair mean is the not to the engage of the money power in election. Election is the fair, free and fair election. Free it means the any kind of the candidate we are qualified the candidate qualification, so we are engage the elections. It means अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जो योग्यता रखता हो इलेक्शन में लड़ने की तो उसे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा. उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा. Moral soundness of the citizen. Moral soundness of the citizen. It means the not discriminations between the citizens, the caste, the religions, date of birth, any kind of the discrimination is not allowed in the democracy. तो मेन जो डेमोक्रेसी है उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव संभव नहीं है. बिकॉज the main power of the democracy in the public and public are united, so the country is the run very fastly of upside. Economic equality. Economic equality means the poor and rich people, between the poor and rich people is a narrow gap, not a broad gap. यानी कि जो अमीर और गरीब व्यक्ति हैं उनके बीच में किसी तरीके का गैप नहीं होना चाहिए. The poor and rich people are the common factor is the democracy. Next is implies open society. Implies open society. It means the open society. It means the in society member are the equal, यानी कि जो सभी समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. एंड द गवर्नमेंट रन बाय द सोसाइटी. जो गवर्नमेंट है वो भी किसके द्वारा चलाई जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, सोसाइटी के द्वारा चलाई जाती है. तो सोसाइटी जब ओपन माइंडेड होगा जितनी भी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो जो ओपिनियन लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा सोसाइटी के, तो सोसाइटी को भी ओपन माइंडेड होना पड़ेगा. उन्हें भी अपनी यूनियंस ऑर्गेनाइजेशंस द सजेशन टू द गवर्नमेंट. अगर वो यूनियन है और जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस है, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी जो यूनियन है वो अपने ओपिनियन अगर गवर्नमेंट को देती है तो सो द कंट्री इज द रनिंग अपसाइड एंड द डेमोक्रेसी इज run successfully.
So today we are study about the condition necessary for success of democracy. India are the democratic government in about 73 years. First condition is free and fair election. The particular time the election was conducted in India. Every 5 years the election was conducted. Next, moral soundness of the citizens. The citizens are the combined and together, so the country is the running of the successfully. Next, economic equality. The poor and rich people between the difference was very low. Next is impeach open society. Open society means the society was the organized and the union of the societies give the suggestion of the government and government the follow his suggestion, so the government is run successfully. So today topic is the condition necessary of the democracy R is closed. Next topic is the different type of democratic government. Thank you.